Namah Shivaya. Namah Shivaya. Guruji, Jai Guruji, Satsang ji. I'm doing satsang after a long time, so sorry if any mistakes. Sir. Generally, satsang का हुकुम आता है, but this time it's the other way around. I got a feeling that I should come and do the satsang. I called Seema Aunty this morning, and Seema Aunty said, "Come on over and do the satsang." So thank you, Seema Aunty, for giving the opportunity to do the satsang. I'm going to try to do the satsang in different parts. So one is a recent incident that happened that kind of shook us, and our experience of our understanding of how Guruji helped us, which is not always straightforward. Sometimes you have to figure out, and to pass on some messages to everyone. So what happened is, परसों रात को we were sleeping and घर का alarm बज गया. So obviously we got up it was 4:40 in the morning. बौखलाए हुए थे, समझ नहीं आ रहा था, तो मैंने सिमरन माई वाइफ उनको बोला कि जाके बच्चों को लेके आ रूम में, तो वो बच्चों को लेके आए. एंड देन वी गॉट द कॉल फ्रॉम द सिक्योरिटी कंपनी, तो दे सेड शुड वी सेंड द कॉप्स, एंड मैंने डोर खोल के देखा तो कोई भी नहीं था नीचे, तो मैंने कहा नहीं, इट्स ओके, आई थिंक इट्स फाइन, लेट मी गो एंड चेक. सो आई वाज ऑन कॉल विद देम, आई वेंट डाउनस्टेयर्स, तो देखा कोई भी नहीं है घर में, तो मैंने कहा कुछ नहीं है, जस्ट फॉरगेट अबाउट इट. सो वी वेंट बैक अप, तब तक सब कुछ नॉर्मल था. बच्चों को डाला वापस, दे वर ऑल्सो लाइक कि अलार्म बज गया एंड ऑल दैट. एंड कई बार फॉल्स अलार्म्स होते हैं घर में, लाइक विंडो इज लिटिल अजार और समथिंग एंड द अलार्म साउंड्स, सो वी थॉट इट्स अ फॉल्स अलार्म. तो मैंने वापस अलार्म लगाने का ट्राई किया, तो इट डिडंट गो थ्रू. इट सेड देयर इज अ इशू विद द स्टडी विंडो. तो मैंने सिमरन को बोला, मैंने कहा लेट मी गो डाउनस्टेयर्स एंड सी कि क्या हो रहा है, तो मे बी द विंडो इज़ अ लिटिल लूज. तो इस बार मैं गया, तो मैं आई ओपन द ब्लाइंड्स एंड आई सॉ कि द विंडो वॉज 4 इंच ओपन एंड जाली टूटी हुई थी नीचे. सो एट दैट टाइम इट हिट मी दैट इट वॉज अटेम्प्ट टू एंट्री इन टू द हाउस. तो मैंने उसको बोला इमीजिएटली call the company and call 911. So we did that. So 5 minutes cops were there. तब तक we were like, तब तक ये था कि किसी ने घुसने की कोशिश करी है, attempted entry. So the cop didn't come from the front door, वो साइड से आया. उसने, तो मैंने बोला ये यहाँ से गराज की साइड से क्यों आ रहा है, राइट? तो इसने बोला देखो. तो मैंने गराज डोर ओपन किया, तो we saw that the garage door was open, the garage window was open and kind of broken. So at that time it hit us that it's no longer an attempted entry, they actually entered the house, they were inside the garage. So then the cops were there, घंटा डेढ़ में they tried to figure out कि कैसे आए, क्या किया. I mean, I won't get into those details, but they did try to come in. They came in through the garage window, they could not come in through the door into the house from the garage, and then they tried to attempt an entry again from the study window, and that's when the alarm sounded, and then they left. So they ran away. So this was kind of the incident. We were shaken a little bit कि यार we've been there 9 years, कभी ऐसे हुआ नहीं, तो एकदम से क्या हो गया, like. And our community generally it didn't happen before. तो अब धीरे धीरे पूरा दिन सेट करना शुरू हुआ कि क्या हुआ, what happened, मतलब we are trying to think about stuff. So one of the things that kept popping in our mind is, so we've been in this house for 8.5 years or 9 years होने वाले हैं, right? We have never ever locked the garage door. Never. It's always open, it's always unlocked, because the entry for the house is from the garage shutters. अंदर घुसे, अंदर open है, अंदर घुस गए. So a lot of you can relate to it, I'm sure. So last 2 weeks से randomly I've been locking the door. I don't know why. Like जाके मैं lock कर देता हूँ, and फिर सुबह सुबह लड़ाई होती है कि क्या प्रॉब्लम है लाइफ में, डोर क्यों लॉक कर दिया है, क्योंकि वो बच्चा बाहर जाता है तो उसको छोड़ने जाते हैं तो अंदर नहीं आ सकते बिकॉज वो अंदर से लॉक्ड होता है. एंड द रीज़न फॉर नॉट लॉकिंग द डोर इज वी ओनली हैव 1 की, और शुरू से ही 1 की थी और कभी सोचा भी नहीं था, चाबी भी अंदर होती है, ठीक है वैसे रहने दो, तो but last 2 weeks say I locked it 3-4 times, and that night,
So generally I have like 2 dinners, one around 6 o'clock और फिर भूख लग जाती है तो 9-10 बजे फिर नीचे पहुंच जाता हूँ कुछ खाने. so so that night the same thing happened. I went down, I took a snack और ऊपर जाते जाते मैंने बोला कि चल लॉक कर देता हूँ, and I just locked that door and went up. So then it hit us कि अगर लॉक नहीं किया होता तो these guys would have been inside the house. We don't know whether they had gun, they had a knife, whatever it is, right? It was very very scary. तो वो फीलिंग और ज़्यादा थी. एंड देन माई वाइफ आस्क्ड मी कि आई अंडरस्टैंड कि हम लोग आपको यू नो वी बीन बगिंग यू कि क्या प्रॉब्लम है, लॉक क्यों कर देते हो, यू नो ऑल ऑफ अ सडन, बट व्हाट हैपेंड टू यू, समथिंग चेंज्ड, राइट? दैट व्हाई आर यू लॉकिंग दिस डोर, यू नो, फ्रॉम लास्ट फ्यू डेज. कुछ समझ नहीं आया. तो वी वर लाइक मे बी यू नो ऐसे ही कुछ इंट्यूशन इंक्लिनेशन आया होगा, लॉक कर दिया. तो इन द आफ्टरनून आई वेंट. तो मैं अपने स्टडी में गया. गुरुजी का मेरा मंदिर वहाँ है छोटा सा. तो मैं मत्था टेकने गया. मैंने झुक के गुरुजी को मत्था टेका एंड आई गॉट माई आंसर राइट अवे. मेरे पास गुरुजी के जोड़े नहीं हैं, मेरे पास गुरुजी के सिर्फ फोटो है. और मेरे घर में 2 हफ्ते पहले मनीष अंकल ने और श्वेता आंटी ने गुरुजी के जोड़े दिए, क्योंकि मनीष अंकल के यहाँ सत्संग था और हम नहीं जा पाए थे. एंड मनीष अंकल ही बेटर ही रिमेंबर्स, लास्ट टू लास्ट मंडे ही गेव मी गुरुजी's जोड़ास. एंड दैट इज द ओनली थिंग that has changed in my house since then. And from last 2 weeks, I have been trying to do the same, in the sense कि door lock कर देता. तो maybe that's my belief that Guruji came into my house and he made me do that, you know, just by intuition. And then the fact that they tried to enter into the study where we have the mandir and they could not, you know. So that reinforces the kind of the faith, the belief, you know, that Guruji is there, you know. So it's still settling in. My wife is not here today because we are not comfortable leaving the kids alone. Abhi hua hai to, you know, dimag mein, you know, a lot of, I couldn't sleep. Last night I slept at 4 o'clock because I said, तुम लोग सो जाओ, मैं उठा दूंगा. Eventually I got to sleep. So this was the incident and our understanding ki how Guruji kind of, you know, he has his ways of protecting the people, you know, that are his sangat, right? And I think this was the way that I felt, you know, that we were protected. I think the third part is obviously there are few things that I want to share with everyone. This is like sangat is all my family, right? Everyone's my family here, right? I know majority of the people here do not lock their garage doors. Please start locking them. At least I shared this with my friends and none of them do it. So kal se sab kar rahe hain, right? Because it's a very small thing, people don't realize, but if someone's in your house, it's a very uncomfortable feeling, right? So that's, you know, one request. And जब तक अपने किसी के साथ होता नहीं तब तक you don't realize कि ऐसा हो भी सकता है, right? And that led me to think more things कि घर में अगर कोई घुस आए तो आप कहाँ जाओगे? हम स्पोरेडिकली देख रहे थे, तू छोटे को लेके आ, मैं बड़े को लेके आ. We have to have a plan कि कहाँ जाना है. अगर कोई आ जाता है तो what do you want to do? Just like offices में होता है, right? You have a fire drill every 6 months, right? What happens if there's a fire? Where do you go? So I would say just kind of plan that, you know. I guess that's it, you know. Thank you for the opportunity of Satsang again. And thank you, Guruji, for being there and blessing us. Yeah. Thank you. अगर कोई